Welcome back. Good morning all of you. Today I will discuss question of linear algebra from GATE 2021. 13th को पेपर था एंड होप आप सब ने ये क्वेश्चंस किया होगा. फिर भी मैं डिस्कस करूँगी जिनसे नहीं बना था. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है ये एंड आई हैव मेड मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक. मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन की है. आई हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस ऑल्सो एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस अमंगस्ट यू. नाउ सी, this is the vector space given. See, since I don't have the question papers, this all are the memory based questions that I am discussing. I have got this question from somewhere, so this might not be the exact question. I have written just roughly. So V is a vector space Px a0 plus a1x plus a2x square of polynomial degree at most 2. What are the things you have to note here? Means you have to focus more on the points like the vector space of polynomial is of degree at most 2, and T be a linear transformation defined by T Px is equal to this. This is the another important thing which we need to solve our question. This is the transformation. See, for linear finding the matrix representation of the transformation T, we basically need two things. One is the basis with respect to which we have to find the transformation, and another is the transformation which is given. Okay, we have to write it in the linear combination with respect to the basis. We have to find the matrix representation. Whatever we get, we write in the columns of the matrix. That is the matrix representation. These all things I have already discussed in my videos. If you want, you can watch my previous videos in the playlist linear algebra. They are very discussed in a very means broad manner, theoretically also, and with the question solved also. So here see what is the question is asking. The sum of eigenvalues of matrix representation of T. So first we have to find the matrix representation, matrix of the transformation, and then we have to find, we can easily find the sum of the eigenvalues of finding the eigenvalues of that matrix. Now how to find the matrix of transformation? Here it is given that the vector space of polynomial is degree at most 2, means it cannot be more than 2. So what is the basis for us here? 1x square is the basis. Okay, x square is the basis, not px. This is the basis which we need to find the matrix representation. Okay, why we are taking here x square only? Because the degree is at most 2, so it is the basis. Also px is given here. Linear combination is the vector space, not sorry, it is the V. So, and the transformation is P0 P1 it is already written in linear combination of the basis. You have to find the coefficient terms here, so we can form the matrix. Okay, it is also already written in a linear combination. See, 1x and x square, these are the coefficients for the 1x and x square terms. So you have to find these terms and you have to write it in the columns of the matrix to get the matrix. See, first what will we do? First, for the basis we have to find the transformation. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? T of 1 निकालना है. T of 1 निकाल रहे तो basically what we are doing here, Px is 1. For Px is equal to 1, we are finding the transformation. So Px is 1 for this case. If we are finding with respect to 1, so if Px is equal to 1, what is P0? P0 भी 1 होगा because it is a constant. P1 भी 1 होगा. So you can easily write it like this. Okay, are you getting my point? Since it is already written in the linear combination form of 1x and x square in the linear combination of the basis, we are not discussing or dealing with this coefficient because it is already written in the matrix form, linear combination form. So you have to just find the coefficients of the matrix from this transformation. And what you have to do, first you have to find T1. T1 is nothing than, in this case, Px will be 1. Px will be 1, then T of 1 is
0 plus 2x plus x square. So these are the coefficients of 1, x and x square. What is the coefficient of 1 here? 0. So in the first, ये मैंने क्या बताया था, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ 1 इज़ 0 एंड जो भी हमें मिलता है t of 1 वी राइट दिस इन द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. 2 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ आवर मैट्रिक्स. Similarly for the second x. Okay, in this case what you are doing or what we are doing, p of x is equal to x in this case. In place of px we are putting x, it means px is equal to x. Then what is p0 in this case? 0 and p of 1 is 1. Okay, so p0 is 0 minus 1, 0 plus 1x plus 0x square. So minus 1 plus x is the transformation for the term x. Now you have to write it in the column. Coefficient of 1 is minus 1, x is 1, and what about x square? 0. Similarly for t of x square, px is x square. Px is x square means p0 is 0 and p of 1 is 1. So again in this case you get the same result, minus 1 plus x. Okay, this is the last column of the matrix. So finally you have obtained the matrix. This is the only thing. Now you have to find the sum of eigenvalues. It is a numerical answer type question. You have to find the sum of the eigenvalues. This is the required matrix. Okay, what is the matrix? 0, minus 1, 2, 1, 1, then 1, 0, 0. अब यहाँ क्या होगा कि कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मैट्रिक्स मिल गया है, देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स गिव्स द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. दिस इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट. एक्चुअली व्हाट वो कब होता है, जब ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स. बट इफ इट इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स देन यू कांट से दैट इज द सम ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज. इन दिस केस मे बी इट इज़ holding or it comes true in this case of matrix particularly, but it is always not true. So you have to find the eigenvalues. For finding the eigenvalues, you just have to write the characteristic equation of this matrix and equate that equation to 0 to find the value of lambda. Since it is a 3 cross 3 matrix, so we get 3 values of lambda, 3 eigenvalues. Okay, on finding this you get I'm just you do the mathematics part. Actually we get 3 values of lambda. One is 0 and 2 complex roots. So these 3 are the eigen values. Sum of eigen values अब क्या होगा? 0 plus half cancelled, so half plus half is 1. So sum of eigenvalues of this matrix is 1 is the answer. So जैसे कि मैंने बोला, if someone think that the sum of the diagonal element gives you the sum of the eigenvalues, in this case it is coming true because 0 plus 1 plus 0 is 1, but it may not be true for some other matrix because it is not a diagonal matrix. You see, it is not a diagonal matrix. If it is upper diagonal or lower diagonal, then triangular, then you can say that yes, the diagonal elements are itself are the eigenvalues. In that case we also find that the trace of the matrix is the sum of the diagonal elements, because trace is the sum of eigenvalues and the sum of eigenvalues is the sum of diagonal elements in case of a diagonal matrix. But in this case you find the eigenvalues and then sum it up. Okay, so this is the first question, and one more question I think of matrix I should discuss today. So here is the second question. I am just writing the main
key points of the question because options are not available. So see, कुछ ऐसा था कि कोई एक matrix A of order 3 cross 4 is given and a matrix B of order 4 cross 3 is given, and it is also given that AB is a non-singular matrix. We have to find the nullity of BA and about its singularity or non-singularity, whether the matrix BA is singular or non-singular, and what about the nullity of this matrix. This is the main focus and main part of the question about the matrix BA. Now see what is the logic behind this question or what are the theorems we will use. Since A is a 3 cross 4 matrix and B is a 4 cross 3, what about AB? AB is a 3 cross 3 मैट्रिक्स. ओके, मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो क्या होता है, पहले का रो एंड दूसरे का कॉलम, तो ए बी जो बनता है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है. एंड अगर हम लोग बी ए की बात करें तो बी ए के केस में क्या होगा, बी 4 क्रॉस 3 एंड ए इज 3 क्रॉस 4. इन दिस केस वी आर गेटिंग बी ए ऑफ ऑर्डर 4 cross 4. BA is a matrix of order 4 cross 4 and AB is a matrix of order 3 cross 3, and AB is given as non-singular, means the determinant of AB is not 0, and so the rank of the matrix AB is 3. क्यों 3 हो रहा है, क्योंकि ये 3 cross 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 है, एंड इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मीन्स द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. इन दिस केस तो क्या होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन 0. सो इन दिस केस वी आर श्योर दैट द रैंक ऑफ ए बी इज 3. एंड वन मोर थ्योरम, रैंक में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, minimum of rank A and rank B. This is a theorem regarding the rank. So here we know that rank of AB is 3. So if we see from here what is the rank of the matrix A and B, since it is 3 and is less than equal to the rank of A and rank of B, which is the minimum value of these two matrices rank. So here you see if A is a matrix of 3 cross 4, its rank cannot be 4. If it is a 3 cross 4 matrix, then its rank can be up to 3 only, sorry. Rank of A is 3, and we can say that rank of A is 2. Okay, can be 2, can be 1, can be 0, but cannot be 4 because it is a 3 cross 4 order matrix. But in this case you see if the rank of A is 2 or 1, or the matrix rank of matrix B is 1 or 2, so if we find the minimum of this 2, then it is 2. बट 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक ऑफ ए बी हमारा 3 आ चुका है. तो इस रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी 3 ही होगा. 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता है बिकॉज इट इज़ अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ये 4 क्रॉस 3 है. तो एट मोस्ट या मैक्सिमम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी 3 हो सकता है या उससे कम हो सकता है. अगर बट उससे कम कुछ होता है तो मिनिमम वैल्यू इन दैट केस विल बी 2 और 1, वट एवर be the minimum rank of the matrix. According to that, suppose are you getting my point, suppose ये अगर हमें नहीं पता था तो उस केस में मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए मीन्स मान लो 2 है और रैंक ऑफ बी 3 है, तो इन दिस केस मिनिमम ऑफ दिस 2 इज़ 2. सो उस केस में क्या होगा कि ये जो भी रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. बट हमारा केस क्या है कि रैंक ऑफ ए बी इज़ 3 बिकॉज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इस केस से हम लोग क्या देखेंगे कि ये रैंक जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों का रैंक को 3 होना पड़ेगा, तभी ये हमारा कंडीशन होल्ड करेगा. ओके, सो वी आर गेटिंग द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी एज 3. नाउ आर टॉकिंग अबाउट बी ए. इफ यू टॉक अबाउट बी ए इज़ अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द नलिटी, नलिटी इज़ वॉट, रैंक नलिटी थ्योरम भी मैंने बताया है. रैंक नलिटी थ्योरम से डायमेंशन माइनस रैंक और n माइनस r इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नलिटी. और इन अदर वे you can also find, like if you know the eigen values, there is another method. If 0 is the eigen value, then finding the n minus rank of this matrix also give you the nullity of the matrix or the GM. This is another case. Here the formula we are using is dimension minus rank. Okay, to find the nullity of the matrix BA, you need dimension. N is nothing but it is a 4 cross 4 matrix. N is 4 here,
and you need the rank of the matrix BA to get the nullity. अब देखिए रैंक ऑफ BA क्या होगा जब कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. रैंक ऑफ A भी 3 है एंड रैंक ऑफ B भी 3 है हमारा. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इसका रैंक 4 तो होगा नहीं क्योंकि 3 क्रॉस 3, इसका भी रैंक 3 है, सॉरी इसका भी रैंक 3 है और ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है. तो इसका रैंक 4 नहीं हो सकता. ये 3 होगा या उससे कम होगा, बट इट कैन नॉट बी 4 बिकॉज दिस रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B आर 3 and 3. सो इस केस में हमारा जो रैंक ऑफ BA है वो 3 हो गया. तो नलिटी क्या आई? 1 आ गई. 4 - 3 = 1. This case we are getting the nullity as 1. So I think one option is given as nullity of BA is 1 is the right option. Singular or non-singular? Since we are getting the nullity as 1 and rank is 3 and it is a 4 × 4 matrix. तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि अगर 4 × 4 मैट्रिक्स है और उसका रैंक अगर 3 है then it is a singular matrix. Means one eigenvalue is 0. Singular matrix means determinant of BA should be 0. So this is the logic behind this question. थोड़ा सा ट्रिकी था. यहाँ से हमें ये देखना है कि रैंक ऑफ BA 3 कैसे हो रहा है. रैंक ऑफ BA 4 नहीं हो सकता क्योंकि रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B दोनों का रैंक 3 है. दोनों का रैंक 3 है. तो जब AB का भी रैंक 3 है, जब AB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस केस में जब हम BA को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रैंक 4 नहीं हो सकता. तो इसका रैंक भी 3 आएगा. उस केस में हमारा डायमेंशन माइनस रैंक gives you the result as well. So these 2 questions I have discussed today, and if you have any doubt then please comment me in the comment section, and I will discuss some more questions tomorrow or day after tomorrow. Okay, thank you for watching my video. Thank you friends.